यू आर आस्किंग मी वेंकट? नहीं एक्चुअली ना वो प्रो का बेनिफिट्स ना फ्री में दे रहा है चैट जीपीटी, इसलिए। कब से दे रहा है? मैं वी आर यूजिंग, मैं तो यूज करता हूँ। हाँ, वो आज से दे रहा है, वो फ्री में सब्सक्रिप्शन ना 12 मंथ्स के लिए दे रहा है चैट जीपीटी का। और ये कब तक वैलिड रहेगा? और वो 12 मंथ्स के लिए रहेगा। कैसे लेना है उसको? उसको आपने लिया क्या? हाँ, हम ले लिया। कैसे लिया? फिर उसको एक्सप्लेन। स्क्रीन शेयर करना, हम बता। गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं ये लेता हूँ, आप भी देख लो, आप लोग भी कर लो। ये ओनली वेब में चलेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, उसमें नहीं चलेगा। चलेगा, वेब वेब से भी चलेगा मेरे को। दिस इज वेब, वेंकट। अम, इसमें इधर अपग्रेड दिख रहा है। हाँ, फ्री। enjoy the faster response, higher file upload limit, all free for next try go. हम्म। ये वाला अपग्रेड। Actually, I'm using this ChatGPT multiple times now. It's required actually. इसका ना वो पेमेंट रिक्वायर्ड मांगेगा। हम्म। वो यूपीआई का थ्रू, नहीं तो कोई कार्ड का थ्रू देख के बाद में तो कैंसिल चैट कर। जीपीटी वो सब्सक्रिप्शन मंथली इतना जाएगा, हम्म, एंड कैंसिल कर सकते हैं इसको? हाँ, कर सकते हैं। पक्का? हाँ, पक्का। हम किया। चलो यूपीआई डालता हूँ। ये बाद में कर लेना अश्विनी। नो, आई विल नॉट हैव डन, गिव मी 1 minute. Actually, I'll do later. It's fine. No problem. I'll do later. इसलिए पेमेंट आप इसलिए। नहीं, पेमेंट आई कैन डू। मुझे लगा ओके। आपका आप टाइम के लिए बोल रहे हो, टाइम जा रहा है इसलिए मुझे लगा आप बोले बाद में करना। वी कैन डू लेटर ऑल्सो। हम्म। मैं कल वहां पे ऑफिस में कर लूंगा बैठ के आराम से। गाइस, यस्टरडे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, हमने बर्न डाउन चार्ट पढ़ा था, राइट? लास्ट टॉपिक। चलिए, तो Yes, sir. टुडे, हाँ, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर वेरी फ्रेश टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज अवर जीरा एप्लीकेशन। जो भी हमने स्क्रम में पढ़ा, ओके, वॉट एवर थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड एज अ पार्ट ऑफ अवर स्क्रम, that we are going to do as a live. तो आप लोग में से कौन कौन ने लॉग इन किया है विथ लैपटॉप? नैन्सी, सुभाष एंड वेंकट। हम लैपटॉप से किए। ओके, वेंकट लैपटॉप, नैन्सी, मोबाइल सर। ठीक है, एंड सुभाष। सर मोबाइल से सर, बस बस सर। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा ना कि वेंकट कैन डू विथ मी, एंड नैन्सी एंड सुभाष यू कैन डू वंस आफ्टर सी द रिकॉर्डिंग एज वेल। ठीक है? Yes. Now we are going to do all the activity. I'll ask some small questions from you, and then we are going to do the same in Jira application. So can you please tell me, Venkat, how we document our requirement in Agile? हम लोग इस स्प्रिंट स्प्रिंट में हम लोग What is my question? हाउ Disappointing, yeah, Venkat. Very disappointing this answer. यूजर स्टोरी, यूजर स्टोरी। No, no, no. Please listen my question. Again repeating, Venkat. Okay, you know the answer. If you don't know the answer, no, that was fine. You know the answer. Okay. Okay, now my question is, in Agile or Scrum, how you document your requirement? Example, you're working as a business analyst and you got some requirement. So how will you going to document your requirement in Agile? अच्छा, हम लोग ये प्रोडक्ट बैकलॉग क्या। Just, just treat this question as an interview question and then answer me. In Agile we are going to the
document. Product backlog and product backlog or print. Okay, let me ask the same question from Subhash. Subhash, how we document our requirement? Let please hear this question and give me answer like your interview. The question is, you had worked as a business analyst for 2 3 years, and you did mostly work in the agile. Okay, so can you please tell me when you were receiving the requirement from your client, what is the way where you document your requirement in agile? How you document your requirement in agile, Subhash? Uh, Sir, we document our requirement in Agile as a user stories and acceptance criteria. And we put all the user stories and requirements in our product backlog. And then then all the requirements goes from product backlog to sprint backlog. And then we create the sprint and the work starts. क्वेश्चन क्या था? ठीक है, मैं से हाउ यू डॉक्यूमेंट योर रिक्वायरमेंट इन agile and Scrum? Hello. हाँ नैन्सी, my question is how you document your requirement in agile or Scrum? So we document the requirements in Agile in the form of product backlog and user story. Have I asked this question before as well or no? Yes, sir, multiple times. Venkat? The product backlog to both. Correct, but we need okay. Let me repeat the answer. Okay. Again, guys, please. You right, Venkat. You told product backlog, but that is not a complete answer. Okay. So the question was how you document your requirement. So we document our requirement in Agile with help of tool called Jira, sir. And in the Jira, we document our requirement in Agile with product backlog, sprint backlog, user story. And if you want to document the test cases as well, sir, we document the test cases in terms of test. We document our test cases in terms of acceptance criteria. Venkat understood? Yes, yes, sir. Subhas understood. Subhas understood. Your answer was right. But आप पूरा प्रोसेस को एक्सप्लेन करने चले गए फिर। Okay, sir. नैन्सी ने अपना क्वेश्चन उठाया, बोला और उसको खत्म किया. So we document our requirement in Agile in terms of product backlog and user story. That was also absolutely right. So आप क्वेश्चन को एंड करो. Venkat, your answer was product backlog, but it was very open, right? Venkat, Yes, yes. it should be close-ended actually. Hmm. So we document our requirement in terms of product backlog and user story. ये भी सबसे अच्छा आंसर है यार, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में. So we document our requirement in terms of product backlog, user story, sprint backlogs, and for doing this activity, we are using the tool called Jira. Okay, if we want to document the test cases as well, sir, so we are document the test cases in form of acceptance criteria. चलिए, ये मैं क्वेश्चन बार बार पूछूंगा, आप लोग प्लीज 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 सही आंसर करो प्लीज. चलो अभी एक और चीज. वेंकट, हैव यू शेयर द नोट्स विद मी विद इन द ग्रुप? Yes, sir. ठीक है. सो इन दिस बाय एंड ऑफ दिस वीक. अच्छा, let me tell you one more point, guys. Tomorrow and day after tomorrow we don't have the class because I'm traveling on Thursday, and tomorrow I'm having some work. And Thursday I'm traveling from Mumbai to Pune, so the train is in night only in this time. So we don't have the class. Directly we'll have class on Friday.
Okay. So on Friday, once you will come, I want you to share your notes as well. जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके notes आप मेरे को share करो ग्रुप में. Nancy will not share the notes in group, but Venkat and Subhash you are going to share. Okay. Okay. Nancy is having some injury in her hand, so she will not able to share. And Subhash also okay. Yes, sir. कुछ टाइम बाय Yes, करना sir. है तो टाइम बाय कर दो, नहीं तो आप ये टाइम जो 1 घंटे का टाइम है ना 2 दिन का, वो ब्लॉक ही रखो अपने लिए फॉर क्रिएटिंग द नोट्स, अगर कुछ छूट गए हैं तो. Yes. चलिए, लेट्स कंटिन्यू विथ अवर एप्लीकेशन कॉल्ड जीरा. वेंकट, you can do with me. Okay, you Okay. open your Chrome and then you simply write Jira login. चलिए, जैसे Jira login आप लिखोगे you will have multiple option, बट जो आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है login to continue login with Atlassian account. This option you need to select to log in into your Jira application. Hmm. Once you will log in, it will ask you to log in with some of the email ID. For me, it is not asking because मैंने पहले भी इसको एंटर किया, लॉगिन किया हुआ है. सर ओके, एक बार और आप मुझे इसका लिंक बताएंगे फिर जीरा से का. फिर से बोलता हूँ, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ. दिस इज योर क्रोम ब्राउजर. ओके, यस. नाउ यू विल सिंपली गो हियर एंड यू विल राइट द जीरा लॉगिन. हमने लिंक डाल दिया रे ग्रुप चैट. हाँ, ओके, यू ऑलरेडी, हाँ. सो वेंकट हैज पुटेड द लिंक इन द Zoom chat. Now you will click on the login to continue. Once you will click on login to continue, मेरे पास ऐसा ऑप्शन आपके थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, बट यू नीड टू सेलेक्ट द यू इट कैन शो द मल्टीपल एप्लीकेशन एज वेल. तो यू नीड टू सेलेक्ट द जीरा. ओके, आपको जीरा सेलेक्ट करना है यहाँ पे. जीरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, टीम्स एंड कुछ नहीं, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द प्लेन जीरा. ये आपको सेलेक्ट करना है. Once you will select the Jira, it will ask you for the more detail. Like it will ask you to create the project and all. ये सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे, मेरे पास नहीं आ रहे क्योंकि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है. ठीक है. देन यहाँ पे आपका क्रिएट स्पेस का एक ऑप्शन आएगा. आपके पास क्रिएट प्रोजेक्ट भी आ सकता है और क्रिएट स्पेस भी आ सकता है. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट स्पेस. अश्विन 1 मिनट. ओके, नहीं वो साइन अप करना है ना, वो मेरा हाँ अकाउंट नहीं. हाँ, प्लीज प्लीज डू साइन अप, विल वेट, नो प्रॉब्लम. क्रिएट योर अकाउंट. Sir, this is what's showing on my mobile screen. मोबाइल पे And नहीं होगा. okay. Actually login तो हो गया, आईडी भी क्रिएट हो गया. I'll just share in the chat. नहीं, आप मोबाइल कैसे, मोबाइल शेयर करोगे? नहीं स्क्रीनशॉट.
Okay, okay. Hey, no, okay. You're saying the group, क्या? Yes. No, in the chat only. Zoom chat. Okay. एक्चुअली इसमें ना मुझे समझ में नहीं आ रही, वो आपका जैसे ना वो नहीं आया था। ठीक है, स्क्रीन शेयर कराते हैं आपका। एक मिनट रुकिए, पहले नैन्सी ने जो भेजा वो देख लेते हैं। नैन्सी कहाँ पहुंची? नैन्सी, इसमें ना हाँ लैपटॉप से ही करो ना, इससे मत करो। एक्चुअली सर अभी मेरे पास लैपटॉप है नहीं, और जो ऑफिस वाला लैपटॉप है वो सपोर्ट नहीं करेगा क्यों? उसमें, और मतलब रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कोई भी दूसरा साइट ओपन करते हैं तो। ये लोग करने नहीं देते। पर मेरे को करने देता है, बट नहीं, पर आई एम अग्री, नहीं करने देता होगा, इट्स फाइन। वो बैंकिंग वाला के ना वो और भी ज्यादा सिक्योर कर देते करेक्ट। हैं। अच्छा, यू क्लिक ऑन ना नैन्सी, यस व्यू सर। ऑल ऐप में क्लिक करो। ओवरलैप। व्यू ऑल एप्स, देखिए यहाँ ओके। पे। व्यू ऑल एप्स। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या 24 से? हाँ हाँ सर। तो कर दो ना स्क्रीन शेयर। ओके ओके शेयरिंग। अरे इतना बड़ा अच्छा, वेरी गुड। सर आपको अलाउ करना पड़ेगा। जी जी, आई एम अलाउइंग दिस। मैंने मल्टीपल कर दिया, अब फिर से ट्राई कर कीजिए आप। हाँ सर। ट्राई अगेन। सर विजिबल है। नहीं, अभी लोड हो रहा होगा, अभी तक तो नहीं विजिबल है। फिर से अनशेयर करके शेयर करो ना, ओके जस्ट। एंड देन वेंकट विल कम टू यू। हाँ हाँ, हुआ 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 हुआ। In view all apps, sir, it is showing this. एक मिनट है, मेरे को Um, दिख नहीं रहा। व्यू ऑल में क्या क्या है? इसमें ना ट्राई अटलेंसियन प्रोडक्ट है ना, उसमें एक बार क्लिक करना। इस पे ट्राई अल्टीसियंस प्रोडक्ट। हाँ, अटलेंसियन प्रोडक्ट उसको ऊपर क्लिक करना, इसमें जीरा। ओके। ये यस ये ट्राई। वाला, ये वाला अश्विनी। जीरा जीरा फर्स्ट वन। ट्राई क्लाउड। हाँ हाँ, ट्राई क्लाउड। वर्क ईमेल मांगेगा सर ये तो। क्या मांगेगा? बाकी वर्क में ईमेल। नहीं नहीं, जीमेल से करो ना, अपनी जीमेल ऑप्शन होगा नीचे। गूगल है ना? बहुत छोटा दिख रहा है मुझे। सर वो आप उसकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे लैपटॉप की, इसलिए। जी जी जी। एक मिनट रुकिए, हाँ क्रिएट कर रहा है वो। हम्म, चलिए, कुछ मत क्लिक करना। वर्किंग। हाँ, यस सर। हाँ, इसमें सबसे पहला क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है क्या? हाँ। क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप। डेवलपमेंट। जी, क्लिक क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैनेज टास्क। ट्रैक नहीं बग। नहीं प्रायोरिटाइज वर्क। नहीं रन स्प्रिंट। नहीं। मैप वर्क डिपेंडेंसीज। हाँ, वर्क इन स्क्रम। वन इज वर्क इन स्क्रम। वर्क इन स्क्रम। जी। Any other thing do I have to choose? नो, शायद इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। नहीं, एक ही चूज करो, चलेगा इसमें। ओके। नाम डालिए। आपने एक मिनट बेटा, आपने जो नैन्सी यूजर स्टोरी जो बनाई है ना जिस प्रोजेक्ट पे, जी। वही हाँ प्रोजेक्ट जी। का नाम डालिए यहाँ पे। गेट स्टार्टेड। जी, टास्क अ स्मॉल पीस ऑफ वर्क। स्टोरी और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कीजिए, एक्सप्रेस नेक्स्ट कर करना। दीजिए जी, नेक्स्ट कर दीजिए। ट्रैकिंग का है सर ये।
नेक्स्ट कीजिए। Do not click on anywhere, huh? Answer. अच्छा आई थिंक सर लोड होने में टाइम ले रहा है। ले दीजिए। बस फिर अगर बैक करोगे ना तो वापस उस आईडी से बनाने में दिक्कत होता है। स्क्रीन शेयर है ना। मीनवाइल वेंकट, यू शेयर योर स्क्रीन। सर हो रुको गया रुको है। रुके 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 रुके, हाँ। हाँ, नेम ऑफ योर स्पेस। माय प्रोजेक्ट की जगह अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। पुट द प्रोजेक्ट ऑफ योर्स। एफेक्ट कैसे बनाएंगे? सर क्रिएट करने का ऑप्शन ये है ऊपर। नहीं, ये दूसरा है इसमें ना एक्चुअली। आपका टास्क वगैरह क्रिएट होंगे, बट ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा ना वो पूरा तो नहीं आएगा नैन्सी, हम्म। बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ सर एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस जितना तो कर पाए, फिर हाँ हाँ, मैं आपको, अवेलेबिलिटी होगा तो हाँ हाँ, उस मैं हिसाब आपको से एक्सप्लेन भी। करता हूँ अभी वेंकट के साथ। जब पूरा मैं एप्लीकेशन सेटअप कर दूंगा ना, मतलब जब हाँ पूरा जी। हम बना लेंगे बैकलॉग एंड ऑल, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। ओके सर। बट ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे ना प्रोडक्ट बैकलॉग का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। कैंसिल करना है इसको। एक सेकेंड सर, इसको डेस्कटॉप साइट में मैं कन्वर्ट करती हूँ। अरे यार। नहीं, इसको बैक कैंसिल कर दीजिए इसको। यस सर, इसमें कैंसिल का ऑप्शन नीचे है ना, जब कहाँ टास्क सर? क्रिएट कर रहे हो नीचे आइए, सबसे आखिरी में आ जाए टास्क के। क्रिएट टास्क सबसे नीचे आपको कैंसिल का ऑप्शन होगा, और नीचे आइए, सर और इसके नीचे नीचे आइए। स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है वो। बैक करेंगे तो क्या होगा? बैक करना है एक बार। हाँ देखो ना, कैंसिल है नीचे। चला गया, फिर से चला गया। नहीं, वो कैंसल्ड वाला ऑप्शन चला जा रहा है। ठीक है सर, आप एटलीस्ट आप वेंकट का स्टार्ट करवाइए, तो मैं उधर से इधर देख के करती हूँ जैसे भी होता है। ठीक है। ओके, हाँ वेंकट, चलिए स्क्रीन। दिख रहा है? हाँ हाँ, इट इज विजिबल नाउ। हाँ, क्लिक ऑन जीरा। वेट, हाँ। हम्म। क्रिएट स्पेस। हाँ, यहीं तक तो आए हैं अभी हम लोग वेंकट। हम्म? यहीं तक आया हूँ मैं भी अभी। चलिए आपके में कंटिन्यू करते हैं पहले। गो अप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्क्रम। धीरे 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 धीरे। तो once you will click on the create scrum, sorry, create space, it will ask you कि which kind of space you want to use. Kanban, Scrum,
तो हमने क्या यूज किया है, स्क्रम यूज किया है. ओके, तो जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रम. ओके, then it will ask you to take the template. So template is already available, you just use template. It will ask you to select the team based project or company based project. Just select the team based project. Now give the project of your Venkat for which you have created the user story. Okay, it's fine. ठीक है, go down. Team manage है, open है. Okay, ठीक है. Now next. Okay, you can have some team member name as well. Okay, just write Nancy at Right, Ashwani at gmail.com. इजी ना, WI. हाँ, AS, हाँ ठीक है, @gmail.com. subhas@gmail.com. So this will help you if you want to actually invite someone, so you can write the correct email address as well. Okay, then invite and continue. So this is your board. Okay, now go to backlog. Cancel. Okay, dismiss quick start. राइट हैंड साइड पे डिसमिस क्विक स्टार्ट है, देखना एक बार. क्विक स्टार्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन है, नीचे 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 से और नीचे डिसमिस ओनली. हाँ, नाउ क्लिक ऑन द 3 डॉट्स. क्लिक करना उसमें. मैनेज क्लिक, कस्टम. हाँ क्लिक क्लिक करना उसको. बैक, गो बैक गो बैक गो बैक. क्लिक ऑन दिस आफ्टर 3 डॉट्स. ये हो ना. ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ हाँ, व्यू सेटिंग करेक्ट. एपिक पैनल ऑन. चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, चलो, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. So again, I'm going to tell you guys कैसे करना है. Again, I will repeat the same thing. Okay? यहाँ तक वेंकट का था, right? Then what I will do, I will select the software development. In software development, I want to select which methodology I want to use. So I'll just select the Scrum. Then in Scrum, I will use this template. Okay? Now I'll click on the use template. As I told you, there are 2 options you can have: team-based project, company-based project. You can have the team managed space. Then you will write the name of your project. So I can simply write, let me give some new name of the project. Access, open access देता हूँ मैं इसको, या one access. One access is my project name. Then I will simply click on the next. Then it will ask you if you want to invite someone, you can invite. Okay, let me give some names here as well. So let me have Nancy @gmail.com. Venkat @gmail.com. Subhas @gmail.com. Then you are going to do invite and continue.
इन लेफ्ट हैंड साइड यू विल हैव ऑल द स्पेसेस, जो भी आपके अलग अलग प्रोजेक्ट है वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। करेंटली आपका वन एक्सेस इसमें प्रोजेक्ट, उसका नाम ऊपर लिख करके आ गया है। ओके, देन विल गो टू द बैकलॉग, and in the backlog we need to start creating the product backlog, but product backlog से को start करने के पहले we need to create the epic। तो epic बनाने के लिए simply I will open the epic panel। first step is to create the epic। now what is epic? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी ज्यादा जाता है इंटरव्यू में। सो व्हाट इज एपिक? एपिक इज द लार्ज बॉडी ऑफ रिक्वायरमेंट that can be break into multiple user story in the different language। अगर मुझे कुछ कैटेगरीज बनानी है, if I want to create some categories, जैसे I want to create one category of landing page। तो लैंडिंग पेज सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा मेरा कि हाउ लैंडिंग पेज विल लुक लाइक। सेकेंड, लॉगिन पेज। थर्ड, साइन अप ऑप्शन। फोर्थ, लॉगिन विथ मोबाइल ओटीपी। So whatever requirement I will have, I will assign this all four user story to one epic, and my epic will be landing page epic। So what is second requirement? Transaction related epic। Okay, in the transaction related epic, I will have the all the requirement which is related to the transaction, जैसे इंटरनल फंड ट्रांसफर, एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर, यूपीआई फंड ट्रांसफर, ट्रांसफर विथ मोबाइल बैंकिंग एंड फॉरेन फंड ट्रांसफर। तो जितने भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो सारे के सारे मैं एक एपिक में डाल देता हूँ। इसका यूज क्या होता है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, लोग ये बोल सकते हैं ओके काम करो पहले ना आप लैंडिंग पेज वाले रिक्वायरमेंट उठा लो। तो जब भी आपको बोलेगा लैंडिंग पेज वाला रिक्वायरमेंट उठा लो, तो यू विल गो टू द लैंडिंग पेज के एपिक में एंड यू विल सी कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमने उसको असाइन किए होंगे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द डेफिनेशन विद हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एज वेल, and this definition you are going to tell in the interview। Okay, so what is epic in software development? So epic is a large body of work that can be broken into the smaller and more manageable tasks, such as the user story and the issues। It's a high level feature or initiative that represent the significant deliverables or the goal of the project or the project roadmap। जैसे लार्ज बॉडी ऑफ वर्क क्या हो गया मेरा? ट्रांजेक्शन रिलेटेड एपिक। तो मैं ट्रांजेक्शन करके एपिक बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा मैं दिखाता हूँ, बट दैट विल बी योर एपिक। देन आई कैन क्रिएट द लैंडिंग पेज एपिक, आई कैन क्रिएट द इन्वेस्टमेंट एपिक। इट इज गोइंग टू हैव सम गोल। Transaction epic will have goal to complete all the user story which is having the transaction related requirement। It is a broad in scope, okay, longer duration and all। So let me try to create the epic। epic आप लोग को समझा? नैन्सी, सुभाष, वेंकट? समझ गया एक्चुअली, Yes, बट sir. वो ये क्या, ये थोड़ा थोड़ा सा एपिक इक्वल टू वन यूजर स्टोरी ऐसा है क्या? नहीं नहीं, करेक्ट। तो दैट आई विल टेल यू नाउ। एपिक अभी अच्छा, माय एक्सपेक्टेशन इज कि आप लोग को इतना समझना चाहिए, एपिक इज द लार्ज बॉडी ऑफ वर्क, और if you want to define some segment, then you can create the epic। let me create the epic now। अब how to create the epic, let me tell you। epic का एक सेक्शन होता है, then you need to create on the create epic, and then you will simply write landing page, enter, transaction related requirements, then investment, inquiry। Okay, I have created this epic।
व्हाट इज एपिक? इस वाले एपिक में आपकी कौन कौन सी यूजर स्टोरीज आएगी जो कि लैंडिंग पेज के लिए एप्लीकेबल है? इन दिस एपिक यू आर गोइंग टू हैव यूजर स्टोरी विच इज रिलेटेड टू योर ट्रांजेक्शन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. इन दिस एपिक you are going to have requirement which is related to your investment. In this epic, you are going to have requirement related to your inquiry. अब कैसे होगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताते जाता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द एपिक. So how to create the epic, understood? Nancy Venkat Subhash. Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. नाउ मैं सेकंड स्टेप इसको मैं क्लोज कर दूंगा. एक बार अगर बना दिया तो बना रह गया मेरा. I just close this. Then I'm going to start creating the backlog. In my down, if you're able to see, your backlog is empty. Now I'm going to create the backlog. यहाँ पे आपको क्लिक करना है. क्रिएट पे नीचे देखोगे दो क्रिएट है, एक ऊपर एक नीचे है. आपको नीचे वाला क्रिएट पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका बैकलॉग है. Then you will click on the backlog and you need to write your requirement. सबसे पहले लॉगिन पेज, साइन अप ऑप्शन, बैलेंस, इंक्वायरी, एंटर. जो भी आप करते जाओगे उसका देखिए एंटर आपको मारते जाना है. जस्ट नीड टू प्रेस द एंटर. बैलेंस इंक्वायरी, देन इंटरनल फंड ट्रांसफर, एक्सटर्नल फंड ट्रांसफर, यूपीआई transfer. What we are creating? We are creating the product backlog. रिक्वायरमेंट यूजर से आते जा रही है, हम उसको प्रोडक्ट बैकलॉग में डालते जा रहे हैं. म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, बैंक सर्विसेज में क्या हो जाएगा हमारा? ई स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, न्यू डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, डिपॉजिट, recurring deposits. So what you are going to create? You are going to create your product backlog. So I have created the total, this set of 13 work item I have created as part of my product backlog. In the similar way, you can also create your product backlog, Venkat. Understood how to create the product backlog, Venkat, Nancy, Subhas? Yes, sir. Yes, yes. Venkat understood? Yes, yes. Now my next task is to create the user story. First task, I have created the product backlog. Second, first task is to create the epic. Second task is to create the product backlog. And third task is to create the user story. So creating the user story, I will click on the QA05, OA05. OA is what? Your 1x का short form. प्रोजेक्ट को जो भी आप नाम दोगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट कर देगा. देन यू नीड टू ओपन इन द न्यू टैब. Okay, then you need to write the user story acceptance criteria of your login page application. डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन. इट विल आस्क यू टू राइट द डिटेल. So first is your login page.
लॉगिन पेज का, या यू कैन सिंपली स्टार्ट डायरेक्टली, यू कैन स्टार्ट विद द यूजर स्टोरी. Here's another option. You can actually start with the user story as well. चलिए, Nancy, help me with the user story. Yes, sir. बोलिए. As a business user, I want to have login page so that Business user, I want to have login page in mobile banking application, so that user will be able to log in into application. user will be able to log in into एप्लीकेशन. ठीक है, ये आपने यूजर स्टोरी लिख दी. यू कैन हाईलाइट इन बोल्ड इफ यू वांट. ठीक. अब इससे इफ यू वांट टू राइट एन एक्स्ट्रा पॉइंट, यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है बुलेट्स का. फिर स्टार्ट कीजिए बुलेट में. डू यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, sir, we can add. बताइए. सर आपने एक लाइन ऐड करवाया था जैसे कि लॉगिन पेज विल बी लुक लाइक अटैच डायग्राम. सो क्या हमारे पास इसमें लॉगिन ऑप्शन पेज, रहेगा अटैच जी करने का? हाँ जी बिल्कुल रहेगा. लॉगिन पेज ओके. विल बी लुक लाइक, या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखता हूँ मैं. क्या टेक्निकल, टेक्निकल क्या है? प्रोटोटाइपिंग या प्रोटोटाइप और login page is available in attached. What is prototype? आपका एप्लीकेशन कैसा दिखता है, उसको आप किसी हेल्प ऑफ डायग्राम से बनाते हो, तो इट इज दैट प्रोटोटाइपिंग. तो यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है. यू कैन सिंपली क्लिक हेयर. नहीं है, सॉरी. यहाँ पे इंसर्ट ऐड इमेज वीडियो और फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करोगे. यू कैन अपलोड, क्लिक ऑन अपलोड, तो ये आपके ब्राउजर में ले जाएगा. ओके. वॉट एवर फाइल यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन अपलोड हियर. अंडरस्टूड. Yes, यहाँ sir. पे ऑप्शन आता है ऐड इमेज वीडियो और फाइल. तो हम ये इमेज है तो हमने कहीं पे स्टोर करके रखी होगी. ठीक है. नेक्स्ट बताइए, व्हाट एल्स यू वांट टू ऐड? Login page will have um, user ID and password. ओके. Forget password option should be there. हाँ जी. Sir, I think वेंकट, यू वांट टू ऐड समथिंग? Password policy. Password should be length minimum 8 characters to 12 characters with this case smart. पासवर्ड पॉलिसी should be follow as per attachment. File name, RBI, पासवर्ड पॉलिसी, और यहाँ पे आप एक अटैचमेंट डाल दोगे फाइल. ठीक है.
Suhas, you want to add something? इसमें एक ही साथ साइन अप ऑप्शन भी रहते तो सही रहते। क्या साइन अप ऑप्शन। अलग है ना, रिकॉर्ड बनाया साइन अप ऑप्शन का। ओके। देखो, इफ यू सी इन आवर डैशबोर्ड, साइन अप ऑप्शन का वी आर आल्सो हैविंग वन वर्ड बैकलॉग। इसका वी विल क्रिएट द सेपरेट यूजर स्टोरी। ओके। ओके, चलिए, लेट मी राइट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ठीक है। पॉलिसी, वेंकट, कैन यू प्लीज टेल मी द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर दिस? चलिए बताइए। तो when user given the When user given correct username and password. correct user name and password, Venkat, Mm. I'm waiting. Then Then up हम हिंदी में बोल जाते हैं। then user application access user application will be able to access his mobile banking. mobile banking. Very good, Venkat. Very good. Sure, okay. Is this correct, Nancy? यस सर, बहुत बढ़िया। करेक्ट है, नैन्सी बट के लिए आप ताली बजाइए। नैन्सी का के लिए ताली बजाइए, अलग से ताली बजेगी नैन्सी के लिए। कहाँ है ताली? नैन्सी, ये करेक्ट है आप बोल रहे हो, राइट? वेंकट, यू प्लीज सर, बट ओपन। हाँ नहीं जी। इसको एक्चुअली गिवन में ये डालना पड़ेगा when सर user give। इसका जो फॉर्मेट आपने बताया था वो गिवन, ये व्हेन एंड इनकरेक्ट देन है, था पहले सर। सेंटेंस से दिस इज इनकरेक्ट, 100% इनकरेक्ट। यस सर। वेंकट, Mm. यू हैव रिटर्न 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 10 acceptance criteria here. Okay. Okay. Then And what is the purpose of writing the acceptance criteria? You tell me. Okay, चलिए, it's fine. Now you remember, that is also fine. कोई बात नहीं, नहीं बताइए। हम फर्स्ट इधर भी हम लोग जैसे when ऐसा लिखते हैं ना given when then। अच्छा, यूजर स्टोरी हमने कैसे लिखी? ऐसे लिखी ना, एज अ बिजनेस यूजर आई वांट टू हैव, वी फॉलो द format, right? Mm. Here also we need to follow the format like that here. Now you tell me. First given First is given, okay. एक मिनट। गिवन में यूजर enter his username and password। Enter user name and password, okay. Mm,
इसमें when लिखना पड़ेगा when okay. When अश्विनी आप ही तो डालिए okay. Nancy, Yes, sir. acceptance criteria. Sir, given में when user come on login page, It's a mobile application there. No? mobile application login page, Okay. when Hmm. user provide correct credential, Hmm. then आएगा सर नीचे application should allow the user to log in. Correct. Correct. It is correct one. It is correct one. So in given Venkat, we are and Subhas, we are going to define ki what the input we are doing. So we are opening the application as an input. Then we are giving the condition. User provide the correct credential. Then system should allow user to log into the application. Okay. In the similar context, can you please write the another user story? Subhas. Yes, sir. Hmm. User story like for the same login, sir. Yes. Acceptance Uh, criteria. acceptance criteria, sir. Like not, sir. Um, acceptance criteria is given when then. सर when user open the mobile application हो गया J. एक और You are saying given में आएगा sir when user open the mobile application. Okay. second if user provide wrong credentials If कहाँ है सर यहाँ तो when है ना हाँ when तो when say user when provide the incorrect credential. yes incorrect credential yes sir J. System will not allow user to log in. Correct. Then में आएगा आपका yes system sir will not allow. System should application should not allow. yes sir Correct. User will not. enter into application yes sir Understood, Venkat? Venkat, no question. User to acceptance criteria understood clearly. How to एक्चुअली document? इधर हम लोग ये क्या है एक गिवन व्हेन देन हाँ जी ये थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा हम ठीक है सबसे पहले गिवन में वेंकट वी नीड टू राइट द इनपुट इनपुट वी कैन से कि हाँ वी आर एंटरिंग टू द वेबसाइट वी आर ओपनिंग द एप्लीकेशन इफ यू सी योर असाइनमेंट एज वेल ओके दैट वी राइट कि आपने क्या लिखा है ठीक है acceptance criteria 1 a user open the application acceptance criteria 2 in given में ही when user enter the mobile application the user and when में tap send the OTP तो OTP के लिए आपका given हो गया मोबाइल नंबर right in the second requirement and user open the appointment page you have created right this yes then it's absolutely right given में we are going to give the input when में condition then में expected output Venkat understood समझ okay we have taken one example today in next class we are going to take one more requirement it's fine
Okay, Venkat? Okay. Now, if in the last you are having add epic का option, you just click on the add epic. It will ask you कि आपको कौन सा epic लेना है इसमें. So we are having multiple epics. So which epic we are going to take? We are going to take the epic called landing page, and we will say done. तो इसमें में आपका landing page epic आ जाएगा. We will simply click on the save it. ये करोगे आपका सेव हो जाएगा. यहाँ से और भी चीजें बची हैं इसमें. That we are going to continue in the Friday class. Don't worry, वेंकट. जब तक आपको नहीं समझेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. डोंट वरी वेंकट, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. Given Okay. when, then again I will explain you in detail. I'll not ask you. I'll explain you again in detail with the example on Friday class, Venkat. Okay? Okay. Nancy understood? Understood, sir. Subhas understood? Yes, understood, sir. Okay, nice. Thank you so much. Any question you are having, you can ask. Nancy, Venkat, Subhas. No, sir. Venkat, नहीं है. Subhas. Not now, sir. एक बार class revise करेंगे, then I'll ask. ठीक. Thank you so much all. I All join think the class. हम लोग का आप पे तो बैंकिंग को एप्लीकेशन देख के बता रहा है. इसमें तो हम लोग को मल्टीपल ऑप्शन रहेगा. ऐसा कोई टास्क कोई दूसरा बता देना, सो हम लोग पता है. अभी हमने ये ओपीडी सिस्टम बनाया, उसमें हाँ. मेरे को ज्यादा तो ये रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं दिख रहा. उसको आगे नहीं, बढ़ने you उसको have written the correct one. This OPD management, they're हम्म, totally different. The healthcare domain project you have selected, and you are going to create the website, right? हम्म. And you are writing the correct user story acceptance criteria. नहीं हम वो नहीं बता रहे. ऐसा अभी आप ये बैंकिंग एप्लीकेशन में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट का रहते हैं ना. और हाँ. ये ओपीडी सिस्टम में तो उतना कुछ नहीं रहते. कस्टमर या पेशेंट आएगा, सेलेक्ट करेगा, डॉक्टर चूज करेगा, बुक करेगा, खत्म हो गया. Correct. ऐसा कोई कोई दूसरा ऐसा है क्या बैंकिंग एप्लीकेशन जैसा है ज्यादा रिक्वायरमेंट रहते? Complex. हम्म. Complex requirement you want. हम्म. Okay, what I will do, I'll stop the recording, okay, and I'll tell you about my project. 1 or 2 user story. It's a very complex one. Okay, हम्म. but requirement complex हो या easy हो, user story will be there. You are saying sir easy तो बनाने आ गया है, but if the requirements will be very complex, then how we need to create the user story? This is your question, right, Venkat? हम्म. So I'll tell you complex requirement. I'll tell you, and then we'll create the user story. Okay. Okay. You are looking down today, Venkat. हम्म. Why? What happened? हाँ नहीं कुछ नहीं. No, no. If you want something, then let me know. नहीं ऐसा कुछ. We can set. ये यूज ये बना रहे ना, इस हम लोग ये विजो में बनाएंगे, वही वही है क्या यूज केस में No, हम लोग Visio is different. So no, MS Visio में we are going to create the UML diagram. That is totally different. This user story and acceptance criteria we will create in the Jira application that we are doing now. Okay. Okay. एक्चुअली हम लोग का ना, मेरा स्क्रीन शेयर करते हैं 1 मिनट. हाँ, मैंने खाना नहीं खाया वेंकटा. 5 मिनट और बस. और डायरेक्टली मैं हूँ क्लास से बैठा हुआ. शेयर योर स्क्रीन. दिख रहा है ना ये वाला? It is loading. It is loading. हाँ, this is your UML diagram. ये यूज केस डायग्राम है ये. हाँ, ये क्या हम लोग जब जीरा में काम करते हैं इस नहीं टाइप नहीं नहीं. No no अपलोड. no no. So Jira में you can just upload it to showcase the process. It is the image. It is just an image. We'll create it. We will create Venkat. We'll create the easy one. We'll create the complex one. I'll give the assignment to you for this as well. ओके. Microsoft Visio you are having, right? यस So this, yeah, you will require this. These are the UML diagrams. इन लोग का चाहिए तो मेरे पास एक देखते हैं. हाँ. ये ना इन लोग इंस्टॉल किया था कौन था. Okay, okay. So when we have the UML की application class ना, then you are going to have this. Because if I want to, हाँ. नहीं किसी को चाहिए तो हम इधर से दे दो.
So नहीं you नहीं share in the group. You are having this detail, right? In the WhatsApp group, if you can share something, people can download. That will help for Nancy and Subhash as well, Venkat. नहीं नहीं, वो वीडियो नहीं दिया है, बाल स्मिथ दिया है और ये दिया था, एग्जोर तो ये दिया है। वीडियो कहाँ से आया आपके पास? नहीं, इन लोग डायरेक्ट मेरे लैपटॉप को रिमोट लेके इंस्टॉल कर लिया है। किन लोगों ने? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट सीओपीडी। हाँ जी, सीओपीडी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, वो सीओपीडी ना। COAPD वाले, ओके ओके ओके, दे हैव डाउनलोडेड एंड दे गिवन टू यू। ठीक है, you हाँ। can also download. It's a Microsoft Visio is a free of charge application, but we'll use the different application for this. नहीं, एक्चुअली इस एप्लीकेशन ना बहुत ढूंढा है, कहीं पे मिला ही नहीं हम लोग को। इवन इसमें रहते हैं ना, K20 What? पीसी में भी नहीं मिल रहा थे। No, so we will use the tool, not MS Visio. We'll use a different tool. I'll tell the name of the tool where you will create the same diagram. Okay, but then I'll explain you when we have the session of UML. Now I'll explain you everything. How we need to create, how we need to learn, and how we do express in the interview. ओके। Okay, Venkat? हम्म। Okay, thank you. Thank you all for joining the session. Have a great Thank night you, ahead. sir. Good night. Bye नहीं, bye. Bye. Bye, sir. Good night.